Hey students, welcome to first botany class. This is the first botany class of this session. Already one zoology class you have taken by madam. So first I am going to discuss about the cell. What is cell? Every living organism composed of cells. So cell and life are inseparable. So life means आमे कहूँ लिविंग एंड नॉन लिविंग दुटा डिफरेंशिएट करूँ कौ माने लिविंग कौ माने नॉन लिविंग तुमको जब पचरा जाए द हु आर लिविंग वेदर यू आर लिविंग और नॉट तो आंसर आसो यस वी आर लिविंग बिकॉज मुझे पचारे कहीं व्हाई यू आर लिविंग तुम तो विभिन्न ढंग से आंसर दब निश्वास मारुचु चलुचु बुलुचु बहुत कथा कह तुम आम जीवन अच्छी एमती आसो तो लाइफ कौन एक्चुअली व्हाट इज लाइफ मीन्स the activity of the organism by which they able to survive बंची रही पे जहाँ जहाँ एक्टिविटी मनीष बॉडी भीतर हुए बा कौन सी ऑर्गेनिज्म रो बॉडी भीतर हुए सेगुड़ा हेले गोटे मनीष बंची गोटे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करिवो तेणु ताको आमे लाइफ बा जीवन अछि बोली कहउछु ताको आमे लाइफ कहउछु तो सेल एंड लाइफ बोथ आर इनसेपरेबल विदाउट सेल देयर इज नो लाइफ meaningless and with cell is the basis of life. So hence cell is regarded as one of the creation of nature. That means all living organism those possesses life जोटा तुम कहूँ जो मान जीवन अच्छे all the living organisms including human being they have life. All living beings are made of one or more cells जोटा तुम unicellular and multicellular coach those organism composed of one cell they are considered unicellular and those organism possesses many cells they are regarded as multicellular. So difference between multicellular and unicellular in the structural point of view unicellular organism composed of single cell only one cell but multicellular organism composed of many cells. This is the structural differentiation because structural point of view this is the difference between unicellular and multicellular. But functional point of view difference कौन ना both organism possesses life, both organism shows similar type of activities. Those are necessary for the existence of life. बंची रहिबा पई जहाँ जहाँ आवश्यक प्रक्रिया प्रोसेस जोटा कि आम मेटाबॉलिज्म कहूँ बॉडी भीतर हवा कथा से समस्त कॉमन रहिबो द ऑर्गेनिज्म वेदर यूनिसेलुलर और इट मे बी मल्टीसेलुलर बट डिफरेंस होउची द ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन सर्कुलेशन एब्जॉर्प्शन ट्रांसपीरेशन ऑल आर द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ये सब एक्टिविटी हेले गोटे ऑर्गेनिज्म बंचिबो सो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आर देयर mitochondria, Golgi body, chloroplast, ribosome, lysosome, all these cell organelles having different functions, different activities are taking place within different types of cell organelles. So aggregation of all the metabolic activities, aggregation of these all physiological process means life. So in case of unicellular organism, all the activities performed by one cell. But in the case of multicellular, it is performed by many cells. This is the difference. All the activities carried out by many cells. That's a division of labor. किसी काम गोटे ऑर्गेनेल करछा गोटे किसी काम अलग अन्य गोटे सेल करछा किसी काम अन्य गोटे सेल करछा तो many cells are there. तो सेल एग्रीगेट टिश्यू फॉर्मेशन होची टिश्यू एग्रीगेट ऑर्गन फॉर्मेशन होची ऑर्गन एग्रीगेट ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन होची इमिति बॉडी फॉर्मेशन होची मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मानो केस रे. So the different organ system performing different way and carrying out different types of functions. So all the activities performed by many cells जहाँ जो डिविजन ऑफ लेबर कम भाग बंटा हो मल्टीसेलुलर केस रे
But unicellular case कौन होची ना such type of scope is not there because total body composed of only one cell. So there is no such type of facility, there is no such type of scope for division of labor, for division of works. So all functions, all metabolic activities, all physiological processes carried out by a single cell. So cell defined as structural and functional unit of living organism. Cell cell is the structural and functional unit. From the structural point of view, cell is the unit. जिमिति गोटे लार्ज बिल्डिंग 5 तला 10 तला 20 तला जते तला बिल्डिंग हो ताकू जदि आमे भांगी भांगी आसीबा लास्ट टू खंडी इटा पाखरे शेष रे पहुंचीबो. ए सिंगल ब्रिक इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ दैट लार्ज बिल्डिंग. सिमिति गोटे बॉडी को जदि आमे भांगी भांगी तळकु तळकु आसीबा ऑर्गन टिश्यू एमिति आसीबा तळकु लास्ट को फाइनली सेल पाखरे पहुंचीबा जोटी फर्दर आउ तळकु आमे तको जाई परिबा नाही. तो सेल इज द लास्ट वन. तो अनेक गुटे सेल मिसी टिश्यू हिची, अनेक गुटे टिश्यू मिसी टिश्यू सिस्टम हिची, टिश्यू सिस्टम एग्रीगेट करी ऑर्गन हिची, ऑर्गन एग्रीगेट करी ऑर्गन सिस्टम हिची. जेमिति देखो द सेल्स एग्रीगेटेड टू टिश्यू. When a group of tissue aggregate together to form tissue system, then a number of tissue systems were aggregated to form organ, then organ aggregated to form organ system, and a number of organ systems were aggregated together to form a body. So finally, highest class la body, last class cell. So from the structural point of view, cell is the unit. कारण गोटे बॉडी को जब हम तळकु ब्रेक डाउन करके आसला लास्ट में सेल पाखरे पहुंचे जोटे आउ फर्दर तळकु जाई होबो नाही. तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू सेल इज द यूनिट स्ट्रक्चर. सिमिलरली फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू रे सेल इज आल्सो यूनिट स्ट्रक्चर. केमिति because the cell contains cell organelles. Different types of cell organelles are present within the cell: mitochondria, Golgi body, lysosome, ribosome, like this. So different organelles having different functions. तो मैं पढ़ी आगु mitochondria respiration, ribosome protein synthesis, plastid photosynthesis. So each and every cell organelle having different functions. So sum total of functions of the cell organelles means function of a cell. When the functions of all organelles aggregated together, then it is the function of a cell. Then when a group of cell functions together, by aggregation of group of cells, function of a group of cells means functions of a tissue. A group of functions of tissue means function of a tissue system. A group of functions of tissue system means function of organ. Functions of a group of organ means functions of organ system. Then all the functions of organ system when aggregated together, then it will be body. So functional point of view, cell is also the unit structure. So both functional point of view and also structural point of view, cell is the unit structure. So cell can be defined as the tiny mass of protoplasm surrounded by a membranous covering and capable of self-duplication, self-reproduction independent of any living medium. This is the definition of cell. Cell is the tiny mass. Tiny means that's a very small mass of protoplasm. जोड़ा कि आदिजीवक ओडिया मीडियम पिला तुम पढ़ुल आदिजीवक इंग्लिश मीडियम जो पिला माने से कहते प्रोटोप्लाज्म डेलिमिटेड माने कवर्ड सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनस कवरिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन द मेम्ब्रेनस कवरिंग जस्ट अराउंड द प्रोटोप्लाज्म इट इज said to be the plasma membrane or cell membrane and capable of self reproduction by the process of mitotic cell division. The cell multiplies
the cell having the capacity to self reproduction. Gote cell multiply kari paribo, tar own capability achi, it can replicate. And the branch of biology that deals with the study of cell means cell biology, or you can say the cytology. The branch of science, there are different branches. Zoology branches पढ़े तो सेल पढ़ाऊँ तथापि कही दरकार जब पढ़ुची. देयर आर सेवराल ब्रांचेस. टोटाल ब्रांच को दी भाग कराई. गोटे प्योर ब्रांचेस, गोटे एप्लाइड ब्रांचेस. जदि किए पढ़ी न शुणी दियो टिके. टोटाल ब्रांचेस को दुई भाग कराई. गोटे हूँ प्योर ब्रांच आ गोटे हूँ एप्लाइड ब्रांच. प्योर ब्रांच आसो गोटे आसो प्योर ब्रांचेस. Another is applied branches. Pure branches, those branches includes only theoretical knowledge. केवल theoretical knowledge जो ब्रांच रे बेस करछु सेटा होची प्योरली प्योर ब्रांच. माने हमें पढुछु फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, टैक्सोनॉमी. These are the branches. Only theory, there is no practical value. केवल आम थियोरिटिकल जानूचु जे या होची जानूचु लिखुचु मार्क पाऊचु पास कर जाऊचु. सिंपली ओनली थियोरिटिकल नॉलेज, जस्ट थ्योरी. प्रैक्टिकली किसी से यूज हो नहीं. तो थियोरिटिकल नॉलेज पर बेस करियो जोडा सेटा सब प्योर ब्रांच रे आसीबो. जोडा हम तुमको कहली साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी, ऑल दीज ब्रांचेस आर कम्स अंडर द प्योर ब्रांचेस. एप्लाइड ब्रांच कोन ना, व्हेन द नॉलेज ऑफ प्योर ब्रांच, when the knowledge of theory, when applied in the practical field, applied in the field of practice, जदि सेटा को हमें practically सेटा यूज करि परिबा, practical field रे तक हमें यूटिलाइज करिबा से नॉलेज को to get some commercial benefit, to get some economical benefit. किछि commercial बा किछि economical benefit पाइबा पई जदि हमें सेही नॉलेज को practical field रे यूटिलाइज करि परिबा, then it becomes applied branch. जेमिति एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, एटा सब हूँ तुम एप्लाइड ब्रांच आसो. दिस इज एप्लाइड ब्रांच बिकज द ब्रांच वेयर द थियोरिटिकल नॉलेज बीइंग एप्लाइड टू गेट सम कमर्शियल बेनिफिट, टू गेट सम इकोनॉमिकल बेनिफिट, टू गेट सम फाइनेंशियल बेनिफिट. किछि हमें लाभ पाइबा पई आमे थियोरिटिकल नॉलेज को से जगह अप्लाई करूछु फील्ड रे. तो दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ प्रैक्टिस, जोटी आम प्रैक्टिकल फील्ड रे यूटिलाइज करूछु नॉलेज को. कम सेटा को आमे कहूछु दिस इज कॉल्ड एज एप्लाइड ब्रांच. सो द ब्रांच, दिस इज द सेल बायोलॉजी ब्रांच बा साइटोलॉजी द कहा जाय. काइटोस एंड लोगस दीटा ब्रांच रिसर्च. काइटोस एंड लोगस दीटा ग्रीक वर्ड दीटा आसे सेटा साइटोलॉजी टर्मटा. तो साइटोलॉजी मीन्स the branch which deals with the study of cell and cell organelles. Then cell is the basic unit of life. Cell is the basic unit of life means already तुम discussion करी साले से पार्ट को. The how cell is the basic unit, जोटा कि structural functional point of view से कथा के आगे तुम discussion कर देली से पॉइंट आउची. तो कोर्स रे अछि सेटा cell is the basic unit because cell is the unit of living organism and cell is the most basic and fundamental unit, both structural point of view and also functional point of view. Both case re this is the unit. But in case of unicellular organism, the body composed of one cell like bacteria, amoeba, yeast. These are single cell organism. Total functions of life carried out by only one cell. While in case of multicellular organism, in case of higher plants, animals, composed of many cells. So, body complexity is much more in case of multicellular organism, but body structure is very simple in case of unicellular organism. So, both unicellular and multicellular organism perform all the vital activities. जोटा मैं कहली, all the vital activities means the life activities. Those activities are performed
by different cell organelles. That means different cell organelles, because each cell organelle having some definite functions. So all total function of the cell organelles means function of a cell. Function of a cell. In case of multicellular organism, the metabolic activities, the cellular activities are divided by many parts. But in the unicellular organism, all the activity गोटे ऑर्गेनिज्म बंचीबा को हेले ता बॉडी भितर जति एक्टिविटी होउची धर आमे जति आम कथा कहिबा आम बॉडी रे एक्सक्रीशन डाइजेशन रेस्पिरेशन ऑल दीज थिंग्स तो टुगेदरली ऑल दी फंक्शंस व्हेन सक्सेसफुली परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग एनी डेफिशिएंसी एनी डिफिकल्टी व्हेन अराइजेस चलती है So any differences arises, any defects develop in any cell organelles, that means the organism facing some troubles due to some diseases or due to some metabolic deficiency. जे कौन सी प्रकार यदि किसी डिफेक्ट आसिला ताना मैं जानिबा से ऑर्गेनिज्म रो प्रॉब्लम हला बोली तेणु से सब जेहेतु यूनिसेलुलर हो पारे बॉडी सेल अनुसार जदि गोटे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो बा मल्टीसेलुलर हो किंतु से लिविंग तेणु जेहेतु से लिविंग तार समस्त एक्टिविटी बॉडी भीतर होथो से यूनिसेलुलर भी से सब एक्टिविटी से करिवो से भी रेस्पिरेशन करिवो एक्सक्रीशन करिवो सब किछ करिवो डाइजेशन हबो एवरीथिंग मल्टीसेलुलर केस रे से कथा सब हबो किंतु डिफरेंस होची द यूनिसेलुलर से गोटे सेल सब करिवो देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर बिकॉज़ बॉडी स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल द बॉडी कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल but in a multicellular the body structure is complicated very complex because many cells performing all these functions by the formation of tissue system organ system like this. So the activities performed by the multicellular organism must be well coordinated. तमने गोटे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जेहेतु डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन करेंगे एवं सबू ऑर्गन फंक्शन एग्रीगेट बा कोऑर्डिनेट कले से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करिबा बंचिबा बा हम कहबा तो ऑल द फंक्शन शुड बी कोऑर्डिनेटेड प्रत्येक ऑर्गन फंक्शन ता कोऑर्डिनेट होना दरकार तेणु से कोऑर्डिनेशन सिस्टम दरकार जोटा ब्रेन कोऑर्डिनेट करे जोटा कि मल्टीसेलुलर सॉरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दरकार देयर इज नो नीड ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन किछि कोऑर्डिनेशन दरकार नहीं कारण सब फंक्शन गोटे सेल करिवो जदि 10टा काम को जणे लोक करूची तो तार कोऑर्डिनेशन की दरकार नहीं ऑल द फंक्शंस परफॉर्म बाय वन मैन कि 10टा काम को 10 जन के भाग कर दिया जीवो गोटे काम को एवं 10 जन काम को जोड़िले जे से रिजल्ट आसीबो तो सेठी कोऑर्डिनेशन दरकार 10 जन लोक के कोन करूछन ताको तो वेल कोऑर्डिनेशन दरकार अछि एवं समान को कोऑर्डिनेट कला परे से जाई टारगेट टी कंप्लीट हो बा जो टारगेट ता दिया हितो से 10 जन भाग कर नैथिबे सारी सक्सेस हो आ सेटा जदी जणे करिवो ता से सब तारी पाखे रेकॉर्ड अछि जे अनेक काई खुजियो जीवो सो देयर इज नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन सो ये गोटे आसो यूनिसेलुलर केस यूनिसेलुलर केस कोऑर्डिनेशन लगी आवश्यकता नहीं देयर इज नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन कारण गोटे सेल सब काम करूची जेहेतु मेनी सेल इन्वॉल्वमेंट होची तो कोऑर्डिनेशन आवश्यकता अछि देयरफॉर सेल इज राइटली कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज अ सेल्फ कंटेंट यूनिट सेल इज अ सेल्फ कंटेंट यूनिट बिकॉज विद इन द सेल all the cell organelles performing all the cellular activities one cell independently exists never depend upon the other cells तो independent existence cell रहे से अन्य गोटे सेल अन्य गोटे सेल पर से डिपेंड करबनी बिकॉज each and every cell is independent all the cellular activities performed by only one cell से निजे सेल सब कर परिबो then come the discovery of cell जदि हम जीवा the credit of discovery goes to the English microscopist Robert Hooke जहाँ आम कह फादर ऑफ सेल बायोलॉजी गोटे बटल कर्क प्लांट क्वेरकस सुबरता बटनिकल नाम गोटे 16 भाया गोटे प्लांट से बटल कर्क प्लांट से प्लांट विषय गोटे स्लाइस नेले गोटे तार माइक्रो सेक्शन नेले देखिले माइक्रोस्कोप ऑन हैंड सब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो नथिला परवर्त समय बहुत पर जासारियन जेनसेन आसले कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेभलप कले से निजे गोटे ओन हैंडमेड लेंस रे ताकि ऑब्जर्व करथिले निजे माइक्रोस्कोप निजे डिजाइन करथिले माइक्रोस्कोप गोटे एवं देखिले ता भीतर वैरायटी ऑफ हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर मऊ फेणा वाले सब खोप ता भीतर अछि एवं ग्रीक वर्ड रो कंपार्टमेंट रो अर्थ होछि सेलुला
तो सेलुलर टर्म रु सेल टर्म से डिराइव करथिले बिकॉज ए नंबर ऑफ एम्प्टी कंपार्टमेंट्स आर देयर बिकॉज दैट सेल वाज डेड सेल तेणु से जो बटल कवर प्लांट रो सेल नहीं था डेड सेल थिला तेणु से कंपार्टमेंट भीतर किसी नथिला खाली एम्प्टी कंपार्टमेंट थिला सिंपली घर घर हेक्सागोनल एरिया सब थिला many honeycomb like small compartments and those findings he found from his experiment from his observation then published before the Royal Society of London in 1665 the Royal Society of London set up se present kale thila London le thila society and first the term cell coined only from this compartment because Greek word compartment शब्द होचे cellular तो from term cellular cell term derive हेतिला तो फास्ट डिस्कवरी कथा जदि आसे क्रेडिट रॉबर्ट हुक को जाए जदि से डेड सेल थिला तांको परे एंटोनी von ल्यूइनहुक बोली आउ जने साइंटिस्ट डच लोक से फास्ट गोटे मैग्निफाइड लेंस रे रेन ड्रॉप गोटे वर्षा पानी को धरले एवं से देखिले स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया सेल को ऑब्जर्व करथिले एवं देखिले से सेलटा एम्प्टी नुहे ता भीतर किछि लिक्विड लाइक सब्सटेंस रहउची एवं फाइंडिंग समान आसला हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स आसला किंतु रॉबर्ट जो कहले एम्प्टी कंपार्टमेंट से सेटा कहले एम्प्टी नुहे रॉबर्ट हो एम्प्टी कंपार्टमेंट कहले एथि पई कहले ता भीतर डेड सेल थिला तर प्रोटोप्लाज्म नथिला आ अदर फाइंडिंग सेम थिला तो फर्स्ट the man Anthony von Leeuwenhoek who first observed the living cell जदि के पचारे who observed the living cell for the first time answer जो Anthony von Leeuwenhoek discover cell कथा आसले से dead cell हेले भी first idea of cell in the term cell as given by Robert Hooke so the credit of discovery always goes to the Robert Hooke though he discovered the dead cell and all the findings of Robert Hooke was published in a book Micrographia short question by मन गोटे सुन माइक्रोग्राफिया गोटे बही से प्रिंट करथिले जो बही रे कि से सब जहा जहा से जो ऑब्जर्व करथिले सेटा सब गोटे फाइंडिंग पब्लिश करथिले सेतरे ड्यूट्रोचेट आउ जन साइंटिस्ट द फ्रेंच बायोलॉजिस्ट observed that plants and animals were made of extremely small globular cells united by cohesions से गोटे कथा कहले the plants and multicellular organisms कथा कहले the plants and animals made up of extremely small globular cells बहुत गोटे globular spherical goal cells and all the cells are united by means of a cohesion माने similar molecular attraction cohesion कहते हैं strong cohesive force exists between the cells so that all the cells are aggregated together compact together so in a finding the ड्यूट्रोचेट बोली जने 1824 रे कहले the plants and animals contains a number of cells and all the cells aggregated together due to strong cohesive force एडेशन माने डिफरेंट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन माने एडेशन होइतंता जेतु सेल सेल भीतर अट्रैक्शन अछि ताको कोहेशन कहउ कोहेसिव फोर्स रॉबर्ट ब्राउन आउ जन आसले 1831 ले से न्यूक्लियस बाहर करतो नेक्स्ट तुम कहउछो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस दोदार्डिन 18000 साइंटिस्ट आसला नोटर देबी देखि दो से मन रख दो सेटा को से कहले द सेल फिल्ड विथ द सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ईच सेल फिल्ड विथ द सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड सार्कोड से कहते सेल भीतर गोटे फ्लूइड अच्छी सेलटा एम्प्टी नुहे कि ड्राई नुहे within the cell there is a semi fluid jelly type रे पूरा fluid नुहे पूरा solid नुहे semi fluid like substance called sarcode the latter that semi fluid like substance named as protoplasm सेटा परवर्त समय से semi fluid like substance को exactly protoplasm बोली कहा गला and that protoplasm term used by Moll in 1838 रे Moll बोली जने से सेटा protoplasm बोली कहले so regarding cell different definitions different views are given by different biologists at different times and all these views and all these
discoveries, when summed up together, aggregated together and represented in the form of a theory, total समस्त इंडिविजुअल व्यू को नहीं गोटे एग्रीगेट करी गोटे थ्योरी फॉर्म देले जोटा कि परवर्त समय सेल थ्योरी कहगला दुई जन लोक गोटे स्क्लेडेन आ जन से स्वान बोथ आर इटालियन साइंटिस्ट 1938 and 1839 M.J. Skladin and P. Swan proposed the cell theory. Cell theory means the individual views regarding cell as given by different biologists at different times. All these findings are represented in the form of a theory. तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी कौन कौन सेल थ्योरी रहला गोटे गोटे व्यू किछि व्यू गोटे हम डिस्कशन करि सालेनी देखो फर्स्ट कहूची ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स दिस इज द फर्स्ट वन जोटा कि ऑलरेडी हम डिस्कस करि सालेनी जे प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिजम भितरे सेल रहउची एवं सेल प्रोडक्ट रहउची प्रोडक्ट सेल प्रोडक्ट माने सेल भितरे जो ऑर्गेनेल अछि ऑर्गेनेल जो फंक्शन सब करूचंती तो ई सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट in all living organisms. This is the first findings. Second asla all cells arise from the pre-existing cell. प्रत्येक cell the pre-existing cell arise करते हैं. Each and every cell arise from the pre-existing cell. जोड़ा कि रोडोल्फ भिर्को बोली जने से कहते omnis cellula एटा होची तार ग्रीक वर्ड एटा ओमनी सेलुला ई सेलुला तार इंग्लिश वर्जन होची द ईच एंड एवरी सेल डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल सेल गुटे कोटी हठात शून्य रु आसु नाही आगु गुटे प्री एग्जिस्टिंग सेल अछि प्री एग्जिस्ट माने आगु जो सेल अछि दैट इज प्री एग्जिस्टिंग सेल तो ईच सेल derived from the pre existing cell this is the second view the cell तार पूर्व गोटे सेल से आगे सेल आसे all cells are basically alike in chemical composition and metabolic activity so from the point chemical composition like vitamin carbohydrate protein fat all these things so regarding the chemical constituents chemical combinations chemical compositions all cells are similar प्रत्येक सेल रो chemical composition almost same and also metabolic activities are also same गोटे सेल जो metabolic activity करियो आ गोटे सेल भी सही metabolic activity करियो तो metabolic activity and chemical composition point of view all cells are similar whether it is plant cell or animal cell each and every cells are similar each cell is a mass of protoplasm जोटा कि डेफिनेशन को कह दीची सेल इज द न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म एवरी सेल सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेनस कवरिंग सेल मीन्स इट इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय ए डेफिनाइट cell membrane or definite membranous covering that is called cell membrane or plasma membrane that is also similar in all cells the activity of an organism as a whole is the sum total activity and interaction of its constituent cells gote living organism activity kotha am कहले से organism body रे जत्ते cell अछि the total activities and interaction of all cells means the functions of the organism or the activity organism प्रत्येक सेल रो एक्टिविटीज बा प्रत्येक सेल रो इंटरेक्शन को प्रत्येक सेल से ऑर्गेनिज्म भीतर जो सेल अछि द सेल्स contained by that individual organism and functions and interactions of activities of all the constituent cells all the component cells of that individual means the activity of an organism. This is called cell theory. Then exception to cell theory. Cell theory किछि बाहर जाउछि किछि कथा. The cell theory does not have universal application. In case of virus, cell theory apply ही करूनी. कारण virus होछि acellular. It is a living but without cellular components. तार cellular material नहीं but living. तो एमिति किछि organism आसी जो के cell theory applicable ही परिबा नाही.
से दिहला एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी कौ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट सेल थ्योरी अंडर आसुना तार अर्थ हूँ एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी डज नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लिकेशन इट हैज मेनी एक्सेप्शंस फर्स्ट भाइरसेस भाइरोइड्स प्रायोन्स ये सब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रियन्स भाइरोइड भाइरस डो नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बट स्ट्रक्चरली न्यूक्लिक एसिड विथ प्रोटीन कोट द बॉडी कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन ता बॉडी भीतर केवल दुईटा जिनिस अच्छे किसी ना नो सेलुलर ऑर्गेनेल्स नो अदर सेलुलर मटेरियल्स एक्सेप्ट न्यूक्लियस नो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन टोटाल दुईटा जिनिस बॉडी अच्छे तो ये जदिव लिविंग किंतु सेल थ्योरी अंडर आसुना सेकेंड प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया ब्लो ग्रीन एल्गी डो नॉट पोजेसेस ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एमानकर ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस अर्थ होची द न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द न्यूक्लियर मटेरियल्स आर रिमेन विद इन द सेल बट नॉट सराउंडेड बाय डेफिनाइट मेम्ब्रेन जोटा कि हायर ऑर्गेनिज्म केस रे डेफिनाइट न्यूक्लियस अछि मतलब ट्रू न्यूक्लियस कहा जाय बिकॉज न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड बाय डेफिनाइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जोटा कि आम कहूँ न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म जो डेफिनेशन आम दौचु सेल मान सेल nucleated mass of cytoplasm the cytoplasm contain a definite nucleus at the center then it's surrounded by a cell membrane a definition काम करू नहीं because the nucleus no definite nucleus is there because the nuclear materials remain mixed with the cytoplasm due to absence of nuclear membrane तो ये सेठी आसला नहीं माने एक्सेप्ट कला तो certain algae like Vaucaria fungi सिनोसाइटिक नेचर होची फ्री न्यूक्ली विदिन ए कॉमन बाउंड्री ए नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेन प्रेजेंट फ्रीली अनेक गोटे न्यूक्लियस गोटे कंपाउंड भीतर गोटे एरिया भीतर सिनोसाइटिक सेल कहा जाए मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म द प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियस जोड़ा डेफिनेशन कहूँ जे सिंगल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and cytoplasm then cell membrane सेठी एठी होनी because एठी multi nucleated cell किछि आसीबो the nucleus contains the cell contains many nuclei अनेक गुडे न्यूक्ली कैरी करथले ताको सिनोसाइट कहल जाय सिनोसाइटिक सेल आरबीसी एंड मैच्योर सिव ट्यूब सेल्स लिव विदाउट न्यूक्लियस मानकर न्यूक्लियस टोटली नाही आरबीसी सेल ले नाही मैच्योर सिव ट्यूब एलिमेंट जोटा फ्लोएम टिश्यू रे अछि सिव ट्यूब द पार्ट ऑफ फ्लोएम टिश्यू there is no nucleus connective tissue contains a lot of non-cellular ground substance called matrix connective tissue blood is a connective tissue skeletal system is also connective tissue तो connective tissue system रे अनेक गोटे non